Good evening, all of you. This is Shantini here. Welcome to Explore Biology. Yes, after a long gap, I came up with a video. Due to some sort of reason, I couldn't continue. Yeah, and basically, this is a requested video from my students' side. They initiated that they want a video on human reproduction, basically on female reproductive system. So this video mainly consists of female reproductive system. Do watch the video. And I'd like to tell one thing, my dear students, that this is not a normal classroom. Okay, so some sort of problem you people will be facing. Here in this video, there are two methods I have used. First one is a pen paper method, and the second one is the board. Why I have used the board at the last? Because you people are very much habituated with the board, so you people can able to easily relate the thing. That's why I have used the board at the last. Try to remember the things, try to remember and relate the things after another, the process easily you can get it. Okay, and stay tuned with the video. Watch the video. It's a little bit long video. Watch the video, and I hope you people will understand. Do watch it. If not one time, then second time you people will understand. I'm sure that you people will understand. Okay, so do watch the video. Okay, so let's get started. Before I start, I would like to tell you a short story. The story is like that: when a girl is born, okay, in her body there are about 2 millions of follicles. In her body there are about 2 millions of follicles. I hope it is visible. 2 millions of follicles are present at the time of birth in the girl child. When the girl will attain the age of puberty, okay, 10 to 11 years of age, okay, when the girl will become reproductively active, at the time this number will reduce to 60 to 70,000 in each ovary. 2 millions of follicles are present in both the ovaries. In both the ovaries, we know that in a female consists of two ovaries, okay, and this number of follicles are present at the time of birth in the female body, okay, in the ovary. Small cells. Follicles are nothing but the small cells. Now, when the girl will attain the age of puberty, okay, this number will get reduced to 60 to 70,000. Clear? Now, after that, what happened? Every month, this from the 60 to 70,000 in each ovary, okay, 6 to 8 follicles are getting released. That is, the egg are getting released. Now, if the egg is not getting fertilized, then it will be shed off along with the lining of the uterus, that is the menstrual cycle. Okay, so shortly I have told you what is menstrual cycle. Now we are going to know what are the things which are happening when the menstrual cycle happen, what are the hormonal changes in our body. So stay tuned and try to understand the thing. Okay, so first of all, let us look at the diagram here. See, this is the female reproductive system. It consists of the ovary. This is the ovary. Okay, this is the ovary. I hope it is visible in the video. This is the ovary. This is the oviduct, which is also known as fallopian tube. Okay, endometrium lining, myometrium lining, and the perimetrium lining. Okay, this is the ovary. This is the cervix, cervical canal, vagina. Now, ovary is grayish pink color, 4 centimeter long, 2 centimeter wide, and weight is around 2 to 3.5 gram weight. Now, when the fertilization take place, students, do you know that fertilization has to take place in only one particular point? It is not like that in anywhere in the fallopian tube it will take place. Okay, it take place only in the one particular point, that is the junction. Okay, the sperm has to come here, the egg has to be there, then only the fertilization will take place, or else it will not take place. That junction is known as the ampulla isthmic junction of the fallopian tube. This is the place where if the sperm get the ovum, then only it will be fertilized with the ovum and it will produce the zygote. Okay, or else if it take place here also, the fertilization will not take place. Here also it will not take place. Here also it is not take place. And this finger like structure are known as femere. Okay, it helps to hold the ovary here in the position. Okay, now this is the structure of the ovary. Ovary releases egg, that I told you na, 6 to 8 follicles. This is the egg. This egg consists of 6 to 8 follicles. Now this is the structure of the ovary. This is the structure of the ovary. Here you will be finding that primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, graphene follicle, and you people will be wondering that what are this primary, secondary, and tertiary. Okay, there's a first question arises in your mind, because primary, secondary, tertiary we have used till date, we have used in mathematics. We have not used in science, and especially in bio, how we are using this. Hold on, I'm going to explain you about these things, that what are the primary follicles, what are the secondary follicles, and the tertiary, and then we will come to the graphene follicle. So if I ask you, or if someone asks you that what is the function of the female reproductive system, what does it does? The function is that it produces egg, that we know it produces egg, receive the sperm, it receives the sperm, provide the site of fertilization, it will provide the site of fertilization, I have explained now, and implantation of the growing embryo. Okay, now this we will know
as we go through the video that how the embryo will be implanted here and development of the fetus. Okay, the difference between embryo and fetus, I know that you people are having confusion regarding that one also, zygote, embryo, fetus. This will be cleared at the end of the video, so stay tuned. So this is the thing, ovary and follicles. What is it? Ovary and follicles, these follicles are the things which are the ovary is made up of. Okay, so ovary and follicles are small sac filled with fluid that are found inside the woman's ovary. Okay, so I told you the story. In the story we have just try to relate. In the story I have told you that at the time of the birth, the girl is having about 2 millions of follicles. Okay, so this what type of follicles it will be? It will be the primordial follicle. Look at the structure of the primordial follicle. This is a structure, simple structure. Okay, and this is the primary follicle, which is the cells, outer cells are more large in shape and little bit developed. Okay, then this is the secondary follicle. Here more numbers of cells are present there. Okay, and this, the space is also here in between the space, this is also more space are there, and many layers are also formed now. Then the tertiary follicle. Tertiary follicle is a fully matured one. See, inside also there are various numbers of cells. This is also a place, there is also a place, and many follicles, many cells are surrounding the surrounding here. Now what is a tertiary follicle? I told you this is a tertiary follicle, but miss, you the question arises in your mind, miss, you have not drawn the diagram of graphene follicle. You have drawn up to the tertiary follicle. Okay, yes, my dear students, I have not drawn the diagram because the thing is that the tertiary follicles exactly look like the graphene follicle. Only the thing is that graphene follicle, why we have given the different name is that we have given the different name because graphene follicles, it is the stage where the follicles, where the ovary is released, ovary is ready for releasing the egg. Okay, at that stage is the graphene follicles. When now let me tell you this, the difference between the tertiary and the graphene follicles. Tertiary follicles are fully matured here. Okay, and but graphene follicles will not tertiary follicles will not participate in the ovulation process. Who will participate in the ovulation process? It is a graphene follicle. Okay, so that is the thing you keep in mind, that tertiary follicle are fully matured follicle and they are ready to be converted into graphene follicle and to release the egg. That is the work of the tertiary follicle. And when they will release the egg, when they are ready to release the egg, they are said to be graphene follicle. Okay, so it will be more clear. Just look here in the diagram. This is the primary follicle, small cell. Okay, this is the secondary one. See, two layers. Okay, this is the tertiary follicle, more developed, and this is the graphene follicle. The structure is same, only it will release. It is ready to release the follicles here, release the egg here. Okay, this take place every month in the female body. Okay, up to this much you understand, and this part we will understand afterwards. Up to this much, this thing happened. Okay, this thing happened. Now, one question, ma'am, there are two ovaries in female body. So is it like that both the ovaries are released in the same month? No. Okay, the answer is no, because if right ovary releases egg in the first month, then the next month the alternate ovary, that is the left ovary, will release the egg. Okay, now that is the topic, menstrual cycle, that we are going to deal with this topic. So menstrual cycle बहुत क्या बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर. ठीक है, बहुत सारी phases है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन according to your syllabus and according to class 10, you should you should not it is not necessary that you should know about detail in all the steps, what are the things which are there, but कभी कभी क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी उन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ क्वेश्चन. सो इसी वजह से आप लोग का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, ये सब बातों का उन्होंने जिक्र किया है. हाँ, उन लोगों ने अलग अलग करके नहीं बोला है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बोला है, ग्राफाइन फॉलिकल बोला है, इसके बाद ईस्ट्रोजन के बारे में बोला है. तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से ईस्ट्रोजन, कहाँ से फॉलिकल मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है. सो प्लीज़ ट्राई टू नो. यू शुड, मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि आप लोग को कंसेप्ट जानने के लिए देखो प्रोसेस तो जानना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आप लोग को स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, स्टेप का नाम जरूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या हो रहा है वो आप समझ लो. तो आप लोग इजीली जो भी क्वेश्चन आए, केस बेस्ड आए, सिचुएशन बेस्ड आए, जो भी क्वेश्चन आए, आप एमसीक्यू आए, जो भी आए, आप लोग उसको इजीली आंसर कर पाओगे और वो कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, सो ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स मेनली व्हाट इज इट, इट इज द that every month the egg is getting released. Okay, from it is getting released through the female vagina, and in the along with that blood, endometrium lining, these are also releasing, and this is the menstrual cycle. It happens every month in girls. Now ये menstrual cycle में बहुत सारे phases है. कितने सारे phases हैं? एक है menstrual phase, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये देखो घड़ी की तरह मैंने बनाया ना, ये 28 डे साइकिल होता है. कितना दिन का साइकिल होता है? 28 डेज का साइकिल होता है, 28 दिन का.
समझ में आया? हाँ, अब आप लोग पूछोगे कि मैम क्या ये 28 डे का सब में 28 दिन का होता है? गर्ल्स आर हैविंग दिस क्वेश्चन दैट मैम वी गॉट पीरियड्स आफ्टर 30 डेज और समटाइम्स 35 डेज आल्सो। सो क्या हमारा कोई प्रॉब्लम है? क्या हमारा कोई डिजीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कि 28 डेज़, 30 डेज़ और कभी-कभी 32 डेज़, 34 डेज़ तक होता है। लेकिन आइडियल हम लोग 28 डेज़ मान के ही चलेंगे। समझ में आया? इसलिए हम लोग 28 डेज़ का साइकिल ही स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो फेज़ है, ये पहला वाला है मेंस्ट्रुअल फेज़, इसके बाद है फॉलिक्यूलर फेज़, इसके बाद है ल्यूटेल फेज़। ये 3 फेज़ है, मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर और ये ल्यूटेल फेज़। ये फॉलिक्यूलर फेज़ के अंदर ही फर्टाइल विंडो वाला आता है। ये क्या है? ये मैं आप लोग को बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, फॉलिक्यूलर फेज से। फॉलिक्यूलर फेज कब होता है? आप जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? जैसे अ गर्ल हैज गॉट हर पीरियड्स इन फर्स्ट मंथ ऑफ द डेट, ओके, आफ्टर दैट और फ्रॉम द 8th, ओके, 7 डे में खत्म हो जाएगा, 0 to 7 डेज, 5 to 7 डेज, वी नो दैट इट लास्ट 7 डे खत्म हो जाएगा। इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से जनरली 5 डे में खत्म हो जाता है, तो 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो 5 फ्रॉम 5th to 11th, दिस इज द फॉलिक्यूलर फेज। यहाँ पे क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज है ना, फॉलिकल्स डेवलप होता है, जो जो छोटे छोटे सेल्स है वो डेवलप्ड होंगे। क्या कैसे डेवलप्ड होंगे? वो मेच्योर बन जाएंगे, वो अपने आप को मेच्योर करेंगे, ताकि नेक्स्ट और एक मंथ में क्या होगा, और एक मंथ आते आते वो फिर से रिलीज करवाए, क्योंकि कौन रिलीज करेगा? ग्राफाइन फॉलिकल ही रिलीज करेगा ना। तो यही होता है, ये फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ये मेच्योर होता है, ताकि वो नेक्स्ट महीने रिलीज कर पाए। ये देखो, ये वाला मेच्योर होगा, मेच्योर होकर वो नेक्स्ट महीने जाके रिलीज कर पाए। ये देखो, ये वाला जगह, ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफाइन फॉलिकल में मेच्योर होगा, ताकि वो नेक्स्ट महीने फिर से रिलीज हो पाए, ठीक है। सो ये काम होता है हमारा फॉलिकुलर फेज में, ग्राफाइन फॉलिकल। सो अब जब ग्राफाइन फॉलिकल अपना एग रिलीज करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ग्राफाइन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा ना, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर हो गया ग्राफाइन फॉलिकल तक, तब क्या होगा, तब इट विल रिलीज द ईस्ट्रोजन। अब ये क्या है भाई? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है। अब थोड़ा साइड आप लोग देखो कि हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? दिमाग और हमारा हार्मोन जो है, एड्रेनलिन पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि कितने सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो रिलीज होता है जब हमारा ग्राफाइन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में हलचल होती है, ठीक है। जब भी ग्राफाइन फॉलिकल रिलीज मैच्योर हो गया ना, ग्राफाइन फॉलिकल रिलीज करने के लायक मैच्योर हो गया, तब वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस में जाके वो इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा हमारे ब्रेन का। वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, पता है भाई, ये मास्टर ग्लैंड है हमारे बॉडी का, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन को सीक्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये फॉलिकल का काम चल रहा है ना, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, वो जो 6 से 8 फॉलिकल है जो हर महीने रिलीज होता है, वो क्या करेंगे, वो जाके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारा डेवलप्ड होगा, ठीक है। और जब ग्राफाइन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, तब क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, हम लोगों ने इतना तक हम लोगों ने देख लिया कि जब हम लोग का हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज में हम लोग का फॉलिकल्स डेवलप्ड होगा, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफाइन। अब ग्राफाइन तक तो हो गया, इसके बाद ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या है भाई? ईस्ट्रोजन क्या करेगा पता है? ईस्ट्रोजन ये लाइनिंग को बढ़ाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा। कितना थिक करेगा? 2 से 4 मिलीमीटर तक, ठीक है, 2 से 4 मिलीमीटर तक इसको थिकनिंग करेगा, इसको बढ़ाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद ये तो हो गया भाई हमारा फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल डेवलप किया, प्राइमरी से ग्राफाइन फॉलिकल, और ग्राफाइन फॉलिकल ने रिलीज किया ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ने क्या किया, हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मोटा बना दिया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो फर्टाइल विंडो, मैंने यहाँ पे आपको दिया है फर्टाइल विंडो, ये क्या है, ठीक है, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज मतलब ये जो दिन है ना, 12 से 16 दिन तक, 16 दिन तक, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इसको हम एलएच सर्ज भी बोलते हैं। आप लोग को इतना एलएच सर्ज जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जानो कि ओव्यूलेटरी फेज में ये एलएच हार्मोन 14th डे में, ठीक है, 14 डे में, मिड में, 28 का मिड क्या है, 14 डे में सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, जिसको हम फर्टाइल, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पिक, ठीक है। और इसी डे में फर्टिलाइजेशन चांसेस बहुत सबसे ज़्यादा माना जाता है, सबसे ज़्यादा इसी दिन माना जाता है फर्टिलाइजेशन का चांसेस। समझ में आया? तो ग्राफाइन फॉलिकल ने क्या किया, ग्राफाइन फॉलिकल मैच्योर या फॉलिकुलर फेज में डेवलप्ड हुआ, हमारा एंडोमेट्रियम का लाइनिंग तगड़ा हो गया, मोटा हो गया। इसके बाद जो इसमें फॉलिकुलर फेज में ही इसी का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा अगर फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो, तो ये एकदम इस दिन एकदम द चांसेस आर नियरली अबाउट मोर देन 95% दैट इट विल
लीड टू द फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ओव्यूलेटरी फेज में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि तब एलएच हार्मोन अपने पिक में रहता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखा था ना यहाँ पे, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है, तो इसी वजह से वो क्या करता है, हमारा जो ग्रेफाइन फॉलिकल तो मैच्योर है, ग्रेफाइन फॉलिकल क्या करेगा, वो जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको डिसइंटीग्रेट करेगा, वो हैमर की तरह काम करता है, हथौड़ा की तरह काम करता है, ठीक है। इट विल एक्ट लाइक द हैमर एंड इट विल रिलीज एज, ये रिलीज कर जाएगा। ग्रेफाइन फॉलिकल क्या करेगा, वो रिलीज हो गया। कैसे रिलीज हो गया, ये प्राइमरी oocyte था, वो सेकेंडरी oocyte में रिलीज हो गया, एग में रिलीज हो गया। समझ में आया। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन फेज है, फर्टाइल विंडो भी हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे एलएच हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से इसको हम एलएच सर्ज भी बोलते हैं। और जब एलएच हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है, वो क्या करता है, वो वो रिलीज करता है प्राइमरी oocyte, एग ही है, हाँ, एग को रिलीज करता है। वो कैसे रिलीज करता है, वो डेवलप्ड होकर सेकेंडरी oocyte, मतलब सेकेंडरी oocyte की तरह वो रिलीज होता है। समझ में आया। तो ये होता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज में, विच इज अ पार्ट ऑफ फॉलिकुलर फेज। देन वी कम टू द ल्यूटेल फेज। व्हाट इज इट। ल्यूटेल फेज में क्या होता है पता है, ये जो जगह है, ये जो जगह मैंने पहले डायग्राम में क्या करा था, ऐसे मैंने हाथ दे के रखा था ना कि आप लोगों को जानना नहीं है, अब ये आप लोगों को जानना है। ल्यूटेल फेज में क्या होता है, ल्यूटेल फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये ग्रेफाइन फॉलिकल जब रिलीज सेकेंडरी oocyte एग वो रिलीज हो गया, तब वो क्या करेगा, ये तो हो रहा है ना, ये तो रिलीज हो गया, ये देखो ये कहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर तो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेवलप करेगा इनटू कॉपर सॉल्यूशन। ओके, ये डेवलप करेगा इनटू कॉपर सॉल्यूशन। तो अब ये कॉपर सॉल्यूशन में डेवलप करेगा, जिसकी वजह से जब वो कॉपर सॉल्यूशन में डेवलप हो जाएगा, हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ये क्या है भाई, ये और एक हार्मोन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बोलते हैं। तो अब जब हमारा सेकेंडरी oocyte यहाँ पे जब फर्टाइल फेज के बाद, मतलब फॉलिकुलर फेज के बाद, जब हमारा ग्रेफाइन फॉलिकल पूरा मैच्योर हो गया, तो अब देखो एक चीज देखो, एक चीज देखो बच्चों, यहाँ तक फर्टाइल विंडो, इसके बाद तो रिलीज नहीं होता। वी आर नॉट गेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 17 डे, आर वी गेटिंग, नो, वी आर गेटिंग एट द 20 डेज, आफ्टर 20 डेज वी आर गेटिंग। सो अभी तो हमारा एग रिलीज नहीं होगा ना, अभी हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा। कब रिलीज होगा, तो इस फेज में, इसमें भी और एक फेज है जिसको हम ल्यूटेल फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ओवरी में क्या होता है, ये जो रिलीज करने के बाद, ठीक है, ये तो एग यहाँ पे जाएगा ना, रिलीज करने के बाद ये इसमें कॉपर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। जब ये कॉपर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने से, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो जाके जब हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाएगा, वो जाके फिर से हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फिर से बढ़ा देगा, ठीक है। ये देखो इसने बढ़ा दिया। तो पहले हमारा ईस्ट्रोजन ने कितना बढ़ाया था, 2 से 4, अब ये कितना बढ़ाएगा, 4 से 6 मिलीमीटर तक बढ़ाएगा। अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट यह क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग इतना बढ़ रहा है। अच्छा, दिवाली आ रही है, ठीक है। अब दिवाली में जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको मेहमान नवाजी करते हो ना आप लोग, कैसे करते हो मेहमान नवाजी, कपड़ा देते हो, नए नए चीज़ देते हो, ठीक है, वेलकम करते हो पूरा। सो ठीक इसी तरह यूट्रस को आने से पहले, यूट्रस में एग आने से पहले हमारा यूट्रस क्या करता है, अपने आप को पूरा नए तरीके से नया लेयर लेके उसको वो बंधन के तैयार रहता है कि नहीं भाई, ओवरी, यूट्रस को तो पता नहीं है कि वो फर्टिलाइज है या नहीं है, तो यूट्रस क्या मान के चलता है कि वो फर्टिलाइज ही आएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, ताकि वो ग्रोइंग ओवरी को, ग्रोइंग एग को, जो एग है वो जायगोट, वो मान के चलता है कि नहीं भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट आ रहा है अंदर, तो जायगोट आ रहा है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, पहले ईस्ट्रोजन ग्रेफाइन फॉलिकल में हुआ, पहले वाला जो ग्रेफाइन फॉलिकल में हुआ ना, तो ग्रेफाइन फॉलिकल ने क्या किया, यहाँ पे ग्रेफाइन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन रिलीज किया, जिसकी वजह से हमारा 2 से 4 मिलीमीटर तक हमारा थिकनिंग बढ़ गया, मोटा हो गया। इसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से जब रिलीज हुआ, ये देखो जब कॉपर सॉल्यूशन में डेवलप हुआ, तो उसने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा दिया हमारे बॉडी का, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से लाइनिंग 4 से 6 तक बढ़ गया, ताकि जब हमारा एग फीमेल यूट्रस में आए तो प्रोटेक्शन की कोई कमी ना रहे, मेहमान नवाजी की कोई कमी ना रहे। अरे भाई दिवाली में आ रहा है, दिवाली में कोई हमारे घर पे आ रहा है मेहमान, तो हम लोग उसको खातिरदारी तो करेंगे ना। तो ये हमारा यूट्रस हर महीने करता है, क्योंकि यूट्रस को पता नहीं होता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फर्टिलाइज है कि नहीं है। अगर फर्टिलाइज हो जाए तो प्रोटेक्शन चाहिए, इसकी वजह से वो पहले से ही भाई मैं अपना काम करके रखता हूँ, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिला के कर रहा है। समझ में आया। तो इसको प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो यूट्रस की लाइनिंग को और भी बढ़ाता है, और क्या करता है, वो इट रेस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द अदर फॉलिकल्स, यहाँ तक ही और कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, और कोई फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगा, यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया। तो इसकी वजह से हम इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो
कॉर्पस ल्यूटम जो है ना वो डीजेनरेट करेगा 14 डे में। 14 डे में ये जो कॉर्पस ल्यूशम है, ये जो कॉर्पस ल्यूशम है वो डीजेनरेट कर देता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, वो डिसइंटीग्रेट कर देता है। समझ में आया? तो आप लोग का एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज 45 डे में हो रहा है तो क्या कॉर्पस ल्यूटेम वो 14th डे में ही डिजेनरेट करेगा या फिर 60 है 30 डे में करेगा? क्योंकि 60 डे में ऐसा नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूशम 14th डे में ही डिजेनरेट होगा। समझ में आया? कॉर्पस ल्यूशम 14 डे में ही डिजेनरेट होगा और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है। ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल्स का जब रिलीज होता है तब जब हमारा कॉर्पस ल्यूशियम में जो कन्वर्ट होता है ना, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में दिखा गया है, ये यूनिक है ह्यूमन बीइंग में, ये और कहीं पे हम लोग नहीं देखते इसको। समझ में आया? सो देन वी कम टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज फ्रॉम ये वाला फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये वाला। सो ये क्या फेज है? देखो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल बी फुल्ली थिकन। सो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ने तो फुल अपना काम कर दिया, पूरा थिकन हो गया। देन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, लेकिन जो एग आया वो फर्टिलाइज नहीं है। लेकिन हमारे यूट्रस को तो पता नहीं था ना भाई ये फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा, तो उसने तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से करके रखी थी, लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या करेगा वो क्या करेगा, वो रिमूव हो जाएगा, वो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो नेक्स्ट महीने फिर से और एक एग आके यहाँ पे इकट्ठा होगा। तो अगर ऐसा ये नहीं निकलता, कितना सारा एग जम जाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रिलीज कर लेता है। तो इसके साथ और क्या रिलीज होता है, ये जो नए नए लेयर्स जो बने थे ना, ये भी रिलीज होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है, हाईली इट इज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो बीइंग रिलीज। सो मैं एक बार ये पढ़ लेती हूँ। देखो, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा हुआ नहीं होता है तो वो क्या करता है, इट गेट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीड। ओके, एंड इट कंटेन, क्या कंटेन करता है इसमें, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कंटेन करता है। जो लाइनिंग बना है ना, एंडोमेट्रियम तो बढ़ गया है, थिक हो गया है, मोटा हो गया है। हाँ, एकदम जीरो था, उससे क्या होगा, 6 मिलीमीटर का हो गया। तो ये सारा निकल जाता है फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वजाइना। क्लियर? यही है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इधर देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज आप लोग को याद रखनी है। क्या चीज? कि नियर अबाउट 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड रिलीजेस इन वन डे। Okay, in one day 20 milliliter of blood releases, and in an overall menstrual cycle 40 to 50 milliliter of blood releases. It lasts for 0 to 5 to 7 days. Girls, few people are having question, I know that, ma'am, for us it lasts for 7 days, it lasts for 8 days also. It happens. Okay, it will happen as you have just started the pubertal age. So these are the things you will be facing for 0 to 7 days. On a It will last for 7 days in you people, but as you grow up it will decrease and it will come to 6 days or 5 days. Okay, now छोटा सा और एक टॉपिक है, आप लोग देख लो, फर्टिलाइजेशन। जब हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिया है तो हम लोग को फर्टिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा ना। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं है। जब स्पर्म, ठीक है, जब स्पर्म यूनाइट करता है ओवम के साथ, एग के साथ, तब क्या फॉर्म करता है? जाइगोट फॉर्म करता है। समझ में आया? यही हमारा फर्टिलाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है, और ये क्या है? फीमेल गैमेट। तो ये जब दोनों यूनाइट होगा, एक साथ होगा, तब जाके जाइगोट फॉर्म करेगा। ये कहाँ फॉर्म होता है? ये हमारा फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्रोलाइसेमिक जंक्शन में ये होता है, जिसको हम 14 डे में चांसेस बहुत हाई। समझ में आया? अब ये जाके यहाँ पे, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये जाके यहाँ पे आएगा, ये एग यहाँ पे आ गया। तो एग जब यहाँ पे आएगा, देखो भाई, यूट्रस ने तो अपनी तैयारी करके रखी है, अपनी लेयर बना के रखा है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रोइंग जाइगोट को, अब जाइगोट से एम्ब्रायो कैसे बनेगा पता है आप लोगों को? ये जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है। ये इसके बाद ये डिवाइड करेगा, एक से कितना बनेगा? एक से दो बनेगा। दो से कितना बनेगा? दो से एक से कितना बनेगा? एक से दो बनेगा। दो से कितना बनेगा? दो से चार बनेगा। तो जब ये एक से दो बन जाता है, इसी को हम जाइगोट बोलते हैं। समझ में आया? और फीटस क्या है? फीटस है जब वो एम्ब्रायो में उस डेवलपिंग बेबी का हैंड, ठीक है, हेड, लेग विजिबल हो जाए, ठीक है, देखने के लायक हो जाए, तब इसको हम फीटस बोलते हैं। समझ में आया? Okay, so what we have discussed up to this much, we have discussed about the reproductive system and the menstrual cycle. Now we'll be revising at a glance what are the things that we have discussed. First of all, you have start with the explanation with the story that a girl is born with small follicles which are known as the primordial follicles. Okay, I hope this is visible. This is the primordial follicles, small follicles, small cells, about 2 million in both the ovaries. These are present. When the girl attains the age of puberty, the number gets reduced. It reduced to 60 to 70,000 in each ovary. After that, every month, 6 to 8 follicles are being released in the that is the egg, which is known as the menstrual cycle. So here, this is the secondary follicle, which is from the structure itself, you people can able to relate that this structure is more number of cells are present in the secondary. Then the tertiary is fully developed, and after that, one more
name I have said one more structure was there, that is known as the graphene follicle. But only the difference between is that the structure is same, that in graphene follicles the follicles are now ready to release. Okay. Then we came across a menstrual phase which consists of menstrual cycle, which consists of three phases: menstrual phase, follicular phase, and the luteal phase. So in the menstrual phase, simply what happened, the endometrium lining will shut off along with the egg and through the vagina. And the follicular phase. In the follicular phase, follicle, what happens? The follicular phase, what happens? The follicle used to get developed. So here, from the hypothalamus that is present in our brain, hypothalamus will initiate in the process in the anterior pituitary gland. Okay, anterior pituitary gland, which releases luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. So here, as follicles we are dealing with, so follicular stimulating hormone, what it will do? FSH will help in the development of the follicles from primary to secondary, secondary to tertiary, and then to graphene follicles, and then this follicle will get released. Now the thing is that in the follicular phase, see here, it lasts for from 6 day to 17 day. Okay, so after the follicles are being released in 17 day only, our cycle is not of 70 days. How many days? It is of 28 days. So here, after the follicular phase, what happened? There is some date. Okay, some days are there from 11th day to 17th day. Okay, this is known as a fertile window, or we can say that here the fertilization chances are very high. So what happened here? Just look at the structure of the ovary. Okay, so here the primary structure will get changed to secondary, then tertiary, then the fine follicle will release. Now what happened? This will release after every 28 days. Now here in the follicular phase, what happened? The follicles used to get developed, and the primary, secondary, tertiary, and graphene follicle. Before releasing of the follicle, the graphene follicle will release what? Will release the estrogen. The estrogen, there is a hormone. What it will do? It will help in the thickening of the endometrium lining. Okay, how much? From 2 to 4 millimeter. Okay, so it has increases. It's from 2 to 4 millimeter. Now after that, it has released there, and this is a fertilization zone, fertile window, where what happened? LH surge. The LH concentration of luteinizing hormone here on the 14th day, it is LH as it is at its peak. Okay, what LH will do? LH will act as a hammer. Okay, it will act as a hammer on the follicles, and it will release the secondary oocyte. Okay, secondary oocyte, that is the cells will get released. Now here one question arises. I have explained on the I have raised this question on during explanation also, that if a girl having menstrual cycle on after 60 days, after 30 days, or after 45 days, that LH surge will be on 14th day or any other day, or it will be the half. No, it is not. It will be on the 14th day only. Whatever the day it is, it will be on the 14th day. Okay. Now it has LH surge will take place, and the secondary oocyte will get released. And here in the ovary, what will happen? This structure will get developed into copper solution. Copper solution. Okay. Copper solution. Now in the copper solution, it will start. This is only unique in human being. It only happens in human being, where the structure will get developed into copper solution. Once it get developed into copper solution, it will release as progesterone hormone. Okay, progesterone. So what progesterone will do? It is also known as a pregnancy hormone. The progesterone will help in the increasing of thickening of the layer. From earlier it was due to estrogen, it was 2 to 4, and now it will be 4 to 6. Clear? Now it will be 4 to 6 millimeters. So now what happened? It is our uterus is fully ready to get the egg, whether it is fertilized or unfertilized. That the uterus doesn't know that, but it is fully ready to get the egg here. So now after that, the egg will come here. Okay, that is known as implantation. Okay, whether it is fertilized or not fertilized, this process used to take place. Now, if it is not fertilized, then what happened? This will get disintegrate. Along with this lining will also get disintegrate. This is known as the menstrual cycle. Clear? And if get fertilized means if the sperm get unite, fertilization, you know that sperm and male gamete get male and female gamete used to get unite. The union of male and female gamete is known as the fertilization to form the zygote. And zygote, how many cells are there? Zygote is of single cell. Then when the cell will develop, it will form the embryo, and after that it will lead to the development of fetus. When in the embryo, the hand, head, leg, these are visible, it is known as the fetus. Okay, and this implantation means what? When this will get this ovary, if it is fertilized, it get implanted, then what will happen? Okay, this structure will help them to protect this ovary. It will not allow them to disintegrate if the fertilization happens. So this is the process of fertilization, okay, that happens in our body in human females. Okay, now the many questions you people are having regarding that, I hope little bit you people have got you people have understood regarding the structure. What are the things which are happening there? What are the things? First of all, that every month the egg releases. The egg used to get released. Okay, alternately, if the right ovary releases the egg in the first month, the next month the left ovary will release. Okay. Second, what will happen in the follicular phase of the menstrual cycle? The follicles will get developed for primary to secondary to tertiary to then graphene follicle. Okay, so graphene follicles, once it get mature, it will release the estrogen. Then the estrogen will help in the thickening of the endometrium lining. After that, it will be the LH surge. LH hormone will increase there in the number which is known as the LH surge. The 14th day, the fertilization zone. Okay. After that, what happened is follicular phase, fertile phase, it's over. Then it's come the luteal phase. Then this
this has released. Now this will start to be converted into the corpus luteum, where the progesterone level, and once it get converted, this happens only in human being. Once it get converted to corpus luteum, the progesterone hormone will be level will be high. It will lead to the development of thickening of more endometrium lining. Okay, from 4 to, earlier it was 4, now it will be 4 to 6. Then this will, they are fully prepared to get the ovary there, to get the egg there, the fully developed egg there. Then this egg will be released by the इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज इट विल बी रिलीज, बिकॉज अगर देखो अगर यहाँ पे रह जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, तो अगर तो क्या होगा, वो रिलीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब आप लोग जो नोट्स है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू नीड द नोट्स आई कैन प्रोवाइड यू द नोट्स। यू कैन, you people can at least message me if you people need the notes. I will be providing the notes there. Okay, I hope you have understand the human reproductive system. Basically about the female reproductive system, what are the things which are going in the female reproductive system, the function of hormones, estrogen, progesterone, how they're working and all. Now, in the end of the video, there is a message for all of you, okay, all the viewers. The message is like that. If you people are having any doubt regarding the context, please feel free to ask. Whom you can ask, please feel free to ask them, because if you don't clear the doubt, it will remain there. Okay. The second one is that please, if you people are having any sort of issue in your reproduction process or any sort of problem in your reproductive health, please do ask, do share with your parents, with your elders, with your teachers if you can. If you don't discuss, if you don't share, it would be a problem in the near future. Especially for the girls regarding the menstrual hygiene and all, please do ask. If you people are having any problem, if you people are not getting the periods on time, you're not getting for many months and all, please do discuss with your elders, and also with, if you can, discuss with your teachers also if you can. Okay, why I'm saying that, because I found many people, many girls especially, they feel hesitate, they feel shame to ask, but this is not a place of shame. Okay, so I hope you have understand the video. Stay tuned, take care, bye bye.